रिफ्रेश करें MS Teams को. In any case, so first we will okay. So first we will discuss about the mathematical preliminaries and the error analysis. So in which I will discuss about the review of calculus, round of errors and the computer arithmetics, and I will not go to the algorithms and the convergence and numerical softwares. I just give you a brief overview which software will use to compute the numerical techniques. So but the main essence is for the review of calculus and the round of errors and the computer arithmetics. So let me go to the first chapter. Wait. जैसे यहाँ पर इसने define किया है the limit and the continuity, and we all know that the definition of the limit is मैं just एक आपको एक rough overview देता हूँ. So the course is this one. I will discuss about the limit first. The limit is, for instance, you have any function f of x and you want to compute its limit. Let us give you a physical overview. This is the x and this is the y-axis, and this graph is the graph of the function, जो कि ऐसे कैसे कहीं plot है. And with the passage of time it is getting stable, but on the same time यहाँ पर एक line ऐसे dotted है, this one. And this line is basically called the limit L, and the black one is the function f of x. So I will rather say while defining the limit, the function f of x and the limit L. So in the both cases, there is a point x which is approaching to the x naught within the interior of the disk. So I will say that the limit x goes to x naught of the function f of x, which is getting equal to the limit L. Why it is getting close to the limit L? Because यहाँ पर इसको देखें, after the some time they both are on the same line and they both are converging. If I look back to this point, this was the transient behavior. This black curve and this solid limiting line was the different. But after some time, they're all lying on the same line. This is why I have written that when you apply the limit of the function f of x and approaching from x to x naught, you will get the exact same limit. So if I more simplify this definition of the limit, I will rather say that the function f of x minus the limiting point L, which must be less than epsilon. The epsilon is basically the difference between the curve of the function f of x and the limiting line L. So इसके दरमियान जितना भी small distance होगा, that will be absorbed by the epsilon, and whenever x belongs to the capital X, while the capital X are the set of real numbers. So इसको मैं define कर देता हूँ. The capital X is set of real numbers. Set of real numbers, right? And the definition is not yet finished. And the important part is 0 less than x minus x naught between the delta.
any value we will get from the difference of the x and x naught. Basically this x minus x naught has coming from this one, because अगर आप ये देखें, let's say this is the any irregular shape, and this is the point, let me call x, and this is the point, let me call x naught, and eventually this point x is approaching to the x naught. So अगर इन दोनों points का distance लें, this will remain between the 0 and delta, and the 0 and delta is the smallest distance. It will be very small and it will be very close to 0. So आप यहाँ पर भी देखें, as x is getting larger, the distance between the red line, solid red line, and the curve is getting very small. This is how the definition of the limit is defined. अगर इसको further simplify करें definition को, you can say that, बल्कि मैं यहाँ से cut off कर लेता हूँ इसे. सर ये जो आपने x minus x naught, just a moment. ये देखें, x was the point, sorry, x naught was the point, because our limit was approaching from x to the x naught f of x is equal to L. But within these bounds, this was a lower bound and this was the upper bound. So जब हमने यहाँ इसको define किया था, look at this one. Let me call this is the equation number star. When it was moving from x to x naught, the function f of x was converging to the L. So same is the case here. This green, so this blue line is passing by this point, and this point is basically x naught. और x naught पे function जो सा किसी converging point L उस पे converge कर रहा है. But if you look on the neighborhood of the values, जो कि x naught minus delta, जो कि left hand limit है उसकी, or which is defined by this regime, x naught minus delta, which will move to the L minus epsilon. And if you move to the upper limit, which is the x naught plus delta, that will be converging to the upper limit. But the point is, one can say that L minus epsilon less than L, which is less than L plus epsilon. So this will be called upper bound, and this will be called the lower bound. The lower and the upper bound only in the sense of the numerical analysis. But if you talk about the calculus, these are the basically the left hand limit and to the right hand limit. And of course, we are working for the numerical analysis, and this limiting point L is basically the converging function. Let me call CF. Yes, यहाँ पर किसी का क्वेश्चन था? ये सर ये डेल्टा क्या डिफाइन किस तरह करेंगे आप? डेल्टा बेसिकली ये मैंने डिफाइन किया यहाँ पर, दिस वन. अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ, जिस तरह आप डेफिनेशन पूछ रहे हो, ये वाली है. दिस इज द सर्कल, दिस इज द पॉइंट, और इसको बड़ा करते हैं. दिस वन, दिस इज द इंटीरियर पॉइंट. Let me call, and from interior to the boundary, of course this has some distance. Let me call जो interior point है वो x naught है, and on the boundary this is x, and this distance is basically called delta, right? So we are working for the x approaches to the x naught,
whenever this x approaches to the x naught, the delta will getting very small, because हमने जब x दोनों पॉइंट्स को अप्रोच करना, ऑफ कोर्स वो डिस्टेंस ही लेंगे दोनों का, and distance cannot be negative. This is why I said that these are positive. Distance तो negative नहीं हो सकता, and so this cannot be 0. This will be very close to 0. Fine. Yes, sir. अच्छा, next है इसके बाद, let me go back to the book. इसके बाद है जैसे कि continuity की definition है ये वाली. The limit f of x is equal to when x is approaching to x naught, the function is defined on the same point, which is f of x naught. The function f is continuous on the set x if it is continuous at each point in the x. So basically x एक set है, उसके अंदर different points, अगर वो हर points के ऊपर define है, then the function is called continuous. Then there's a differentiability. You all know about the differentiation. The function f is differentiable if and only if. This is called the definition of the differentiation. So, and this is the extreme value theorem, and moreover, I'm going to the main point. This is the generalized role theorem, intermediate theorem, or the sandwich theorem. और रीमान सम तो सब ने पढ़ा होगा MT 101 में, जहां पर area under the curve find करते हैं by using the different blocks. Or this is the main point of our topic. So the Taylor polynomial and the series. Look, so this is the Taylor polynomial and the series. We all know that the theorem in the review of calculus described about the Taylor polynomial. These polynomials are used extensively in the numerical analysis. Let's say there is a function f. This is the function f, which belongs to Cn on the AB. This means that the function is n time differentiable on the interval AB. Whenever you say that the f belongs to the Cn, so this means that the function is n time differentiable, and moreover he has defined like on the interval AB is this one. Let me say there is a function f of x is equal to sine x. So what would be the first differentiation of this function? What is the differentiation of sine? Which is the cos x. Similarly, the f double prime, f triple prime, and up to so on. So this will move up to the infinity. So one can say that the trigonometric function, which is a sine x, the sine x belongs to the belongs to the infinite time differentiable on the interval -1 to the 1, because the sine is sinusoidal function. It can play between the -1 and to the +1. So it still depends on the nature of the function. On the other way,
there is a function, let me call f of x is equal to the x squared. So the first derivative f dash of x is equal to 2x, f double prime of x is equal to 2, and the f triple prime of x is equal to 0. So how many times it is differentiable? First, second, and the third is 0. So this is a 3-time differentiable function. If you take the fourth and so on, this will remain 0. So one can say that the function f of x, this belongs to the C 3 times, 1, 2, a 3-time differentiable function. So this is what he's saying in the Taylor theorem. Suppose the function f belongs to the C and n-time differentiable on the interval AB, that the function n plus 1. So the nth plus 1 derivative exists on the AB. So he's saying that, let's say you have computed the nth derivative like somewhere here, fn, right? Fn of x. So he's saying that there's another derivative which is the f of n plus 1. It will exist on the interval AB. The interval AB कुछ भी हो सकता है, like this one between A and to the between B. And for the x naught, A and B, not only for the fn plus 1 but also for the point x naught, and that x naught was the interior point जहां पर x converge कर रहा था उस point को. So for every x belonging to the AB, there exists a number xi of x between the x naught and to the x. So this xi is basically used to compute the truncation error. I will let you know how. So suppose that this is the function, and this function is separated by the two polynomials Pn of x, and other polynomial is Rn of x. So the Pn of x is devoted to the Taylor polynomial or the Taylor series. You can say that Taylor series, and the R of n will define for the error. The error will be defined like जैसे इसने यहाँ define किया है कि where the Pn of x, ये क्या है हमारे पास? This is the Taylor series. So this, because this series is not defined on the origin. This is defined on the point x naught, and the x naught basically when we were defining the limit x goes to x naught of the function f of x is equal to L. So this is the x naught which is appearing over here. So we have expanded up to the nth order and then sum up into the one expression. So the problem for the, let me call this equation number 1, and this was equation number 1. This is solved. But what is R of n? The R of n is basically, let me just cut directly from the book. Okay, and this was the Rn. Let me explain like this. This is 2 and this is 2. Now go back to the definition where he was saying that the function f is nth time differentiable on the interval AB, that the fn plus 1, which is the nth plus 1 derivative of the function, exists on the interval AB. So we have already decided that the function f of x is the composition of the two polynomials. The one is Pn of x and another one is Rn of x. While the Pn of x is the Taylor theorem of the Taylor series, and the Rn of x is basically
called the remainder or the truncation error. So this is Rn is the remainder term or the truncation error which is associated with the Pn of x, while the Pn of x is the Taylor polynomial about the point x naught. So now the point is, the interesting point of this theory is the number xi of x is the truncation error. Rn of x depends on the value of the x at which the polynomial Pn of x is being evaluated. So now whenever you compute the polynomial of the function, any function n of f of x, you also need to compute the number xi of x, which is the truncation error. But this truncation error will only depend on the polynomial Pn of x, which is being evaluated. It is the function of the variable x. However, we should not expect to able to explicitly determine the function xi of x. Taylor theorem simply ensures that such function exists and it lies between the interval x and to the x naught. जैसे मैंने लास्ट में अभी बताया था, this was the point x and this was the point x naught. So error will lie somewhere between this one. So क्योंकि when x is approaching to the x naught, we don't know how much we can shrink or how much we can push the point x to the x naught. So there must be some error remain between the interval. So one of the common problems in the numerical methods is to try to determine the realistic bounds for the value of the f of n plus 1 of xi of x when x is the some specific or the specified intervals. So the one thing we have done, the first thing is we will find the approximation of the solution of the given problem by using the Taylor polynomial. The second one is whenever we find the approximation of the Taylor polynomial, how do we know that this polynomial is suitable for our numerical computation or not? So for that we will use the bounds, upper and the lower bound. जैसे मैंने अभी यहाँ define किया था, this was the lower bound and this is the upper bound. So we will use the same mechanism in our theory to find the bounds to check our results, either they are useful for the numerical computations or not. So for this, for time being, I will hold for a while over here and move to the transformation from Taylor to the Maclaurin series. एक मिनट है so the infinite series obtained by taking the limit of Pn as n goes to infinity. अब देखें यहाँ पर, let's say we have equation number 1, which is the Pn of x. If I apply the limit of this expression, let me say equation 1 gives the limit n goes to infinity, Pn of x is equal to the limit n goes to infinity and this one. तो उसके अंदर आपके ये वाला जितना expression है ये वाला, you can write up to here. So you'll apply the limit. Is called the Taylor series. पहले यहाँ तक तो ये Taylor polynomial है, but the infinite series obtained by taking the limit. Whenever you apply the limit, this will be called the Taylor series for f about the point x naught. In case if this x naught is equal to 0, then the Taylor polynomial has become the Maclaurin polynomial. And the Taylor series is often called the Maclaurin series. So whenever this x naught is equal to 0, this Taylor series or Taylor polynomial will turn into the Taylor polynomial or to the Taylor series. The term truncation error is a Taylor polynomial refers to the error involved in the using a truncation or the
finite summation or approximation of the sum of the infinite series. अब इसका ये है कि मैं क्वेश्चन पे मूव करूंगा. द क्वेश्चन इज, यहां तक किसी को कोई इशू है, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड्स. अगर किसी को इशू है आप पूछ सकते हैं. G484, yes. Unmute your mic. Sir, why? 48. Sir, why are we Loud taking? बोलें थोड़ा सा. So why does n go? So why does n go to infinity in this case? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बहुत स्लो बोल रहे हैं. लाउड बोलें थोड़ा सा. Sir, what I'm saying is, why does n go to infinity in this case? Because यहां पर हमने nth कितनी टर्म्स ली हमने. एक सेकेंड. यहां पर इक्वेशन नंबर 1 को देखें. हाउ मेनी टर्म्स वी हैव? फाइनाइट टर्म्स. बट if this n is getting very very large, this n or this n, it means you have infinitely differentiable functions. तो इसका मतलब है कि हम मैक्सिमम पॉसिबल जितनी टर्म्स हैं उनको कंसीडर करेंगे. अभी जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल की थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ऑफ एक्स की. दैट वाज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन, राइट? On the other side, whenever I took the function f of x is equal to x squared, so it was twice or thrice the differentiable function. So in that case, the function when f of x was x squared, that was finitely differentiable, while on the other side, the trigonometric function or the exponential function, or you can say logarithmic function, they are finitely differentiable. So I'm trying to have the very general one. अगर आपके पास infinite के ऊपर अप्रोच करते हैं, infinite series के ऊपर अप्रोच करते हैं, infinite polynomial के ऊपर अप्रोच करते हैं, this automatically means you can also control the term for the finite sums or the finite series. अच्छा, इसका क्वेश्चन देखें. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन मैं करता हूँ. यहाँ स्टार्ट करते हैं. This is the question. In this question, he's saying that let f of x is equal to cos x and x naught, which is the series about the point which is 0. Determine the second Taylor polynomial for f about the point x naught. We know that the solution says, we know that f is infinitely differentiable because the function f of x is cos x, and on the infinite time you will have the derivative, and infinite time you will have the derivative, and you can define on the real number. ठीक है? Okay, you can also write between -1 to 1, जिसका interval है. So in that case, the Taylor theorem can be applied for any n which is larger than equal to 0. 2018,484. 2018,484. Yes, sir. अभी आपने क्वेश्चन किया था ना कि हम इन्फिनिटी के ऊपर इसको क्यों लेके जा रहे हैं.
आंसर मिला आपको अब यहाँ पर जो मैंने ये लिखा अभी f Yes, sir. is Thank you so infinite. much. नहीं, मैं जो अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ इस पे रीजन पता चलिए क्यों मैं लिख रहा हूँ इस पे इन्फिनिटी पे। पहले मैंने सर वो इसको थोड़ा सा इन्फिनिटी के ऊपर एक्चुअली डिफाइन नेट। किया और देन मैं कह रहा हूँ जी दिस सर। थ्योरम टेलर थ्योरम कैन बी अप्लाइड फॉर एनी n larger than equal to 0. अब of course we cannot go यस up to सर। infinity. Within infinity we can use any value for any n. So we have the freedom just because of this function f of x which is equal to cos of x. So और अच्छा इस क्वेश्चन में कहता है कि let f determine the second Taylor polynomial. So second Taylor polynomial is हमें ये यूज करना है the function f of x is equal to the Pn of x plus Rn of x. Of course, this one is a Taylor polynomial and this is a truncation error or the remainder term. So how many terms we are needed? The second Taylor polynomial. So for the second Taylor polynomial, we will need that. Let me first write Pn of x, which is the f of x naught. मैं अभी general term लिख रहा हूँ because it is defined on the x naught is equal to 0 plus f dash of x naught into x minus x naught plus the term f double dash of x naught x minus x naught divided by 2 factorial, and the third one is fourth one. In fact, I will tell you why I'm writing the many terms. Sorry, third one is f of x naught x minus x naught divided by 3 factorial. So how many terms there are? 1, 2, 3 and 4. But यहाँ पर तो इसने ये कहा कि second Taylor polynomial करना है. Why I have written the 4 terms? कोई बता सकता है इसका आंसर? सर समझ Yes, नहीं आया 4 सर। and 4. Sorry? सर वो सर समझ इसलिए नहीं था आया। क्योंकि आपने f of n+1 तक जाना था according to the definition. दोबारा सोचें इसको थोड़ा सा। इसमें क्या कहता है? Read the question again. Let the function f of x is equal to cos x and the x naught is equal to 0. Determine the second Taylor polynomial. Second तक तो करना तो मुझे ये first 2 terms लिखनी चाहिए थी. Why I have written these extra 2 terms? Just because, let me show you why. The function first, of course, the function f of x is equal to the cos x, right? The first derivative is, which is f dash of x is equal to minus sine of x. Second derivative is f double dash of x is equal to again minus cos of x, and the third derivative is f triple dash of x is equal to sine x, right? But यहाँ देखें, here he is saying that x naught is equal to 0. We need to define this series. ये तो मैंने अभी जनरल डेरिवेटिव्स लिखे हैं इसके. But the Taylor series or Taylor polynomial said this the function f must be defined on its interior point f of x naught. So and the f of x naught is equal to 0. So मुझे ये वाला f of x naught इस सीरीज के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है पूरी के अंदर. So क्या बनेगा? f of 0 cos 0 is 1, f dash of 0 is again sine 0 is 0, and f double dash of 0, which is this one, cos 0 is again 1, sorry, minus 1 with this one.
and the third derivative f triple dash of x and the sign of 0 is again 0. So कितनी टर्म्स बन जाती हैं यहाँ से? Of course, when f dash of 0 this goes away and this goes away. इसका automatically मतलब है जो ये वाली टर्म्स है ये वाली and the third term will go away. So we will remain the first term and to the third term. So all together we will have the two terms. जब भी वो two terms की बात करेगा टेलर पॉलिनोमियल, you cannot compute only the first two terms. The first two terms only valid after the points x naught, जब आप इन points को substitute करेंगे उसमें. So in that case I will just write Pn of x as a for n is equal to 2, for n is equal to 2 and x naught is equal to 0, जो कि हमने already इसकी derivation निकाल ली है. We find that cos of x, and of course this was the बल्कि इसको ऐसे लिख लें, sorry, polynomial p2 of x is equal to cos of x, which is equivalent to क्या बनेगा? f of x naught was कितना था? 1 when after substituting the point x naught is equal to 0. 1, this goes away because f dash of x naught was 0, so the whole term is 0. And this one f double dash was -1 and the x minus x naught, so I can just write it as -1, x will remain as it and the x naught is equal to 0, so all together this will become 1 by 2 x squared. यहां तक तो ये बना, और अगर मैं इसका टोटल पॉलिनोमियल लिखता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन स्टार, आई कैन जस्ट राइट इट एज, इसको बल्कि ऐसे लिख लें, f of x is equal to p2 of x plus r2 of x. तो ये क्या बनेगा? This will be equivalent to 1 minus 1 by 2 x squared, जो कि ये चीज हमारे पास आई थी p2 of x से, plus now I'm going to write the truncation error which is very important. R2 की जो definition मैंने यहाँ define की है last में, this definition which is defined by the equation number 2, this one Rn of x. So in our case this will be R2 of x and n is equal to 2, so the third derivative was defined like, which was on the point 0 and then n plus 1 factorial, तो 3 plus 1 factorial आप यहाँ पर लिखेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास, सॉरी ऑल टुगेदर मैं लिख देता हूँ इसको, इस टर्म को, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 by 6 x cube sine xi of x, and this xi of x is very important because this whole term is Rn of x, which is a truncation error or the remainder, or sorry, this is not Rn but R2 of x. नेक्स्ट इसको ये करना है कि लेट से हमारे पास x नॉट जो पॉइंट गिवन था, इस पॉइंट के ऊपर तो हमने ये कंप्यूट कर लिया, दिस इज दी वी हैव दिस एक्सप्रेशन बट वी डोंट नो द बाउंड्स.
बाउंड होता है या तो इससे अपर लिमिट के लिए या लोअर लिमिट के लिए. If I choose any value in the neighborhood of 0, let me choose when, you can say that when x is equal to 0.01, this becomes, यहाँ देखिए ये इंटरेस्टिंग है इसमें, this becomes cos of 0.01. Now I'm not evaluating cos of 0, but now I'm evaluating cos at the point 0.01. This will equivalent to the same is this one, 1 minus 1 by 2. At the place of x, I will write back 0.01 squared plus 1 by 6, 1 by 6 x, which is a 0.01 cube, sine xi, and the xi of x, and x is 0.01. So let us simplify a bit. This will become 0.99995. This is only has become from, sorry, this has only become from these two terms. Plus, इसको simplify करेंगे तो आपके पास बनेगा 10 raised to power minus 6 divide, because this will goes up, and after 0.01 whole cube is 10 raised to power minus 6 divided by 6, and the sine of xi 0.01. Now this black term, the one is written in black, this is approximation to the cos 0.01 given by the Taylor polynomial, is therefore is 0.9995. The truncation error or the remainder is this one. ये तो हमारे पास cos की approximation आती है. Let me call this is the approximation, and this one will be called the truncation error. Truncation error or the remainder term. And this is basically, if I only talk about this term, which is 10 raised to power minus 6 divided by 6 sine of xi 0.01, this will be equivalent to, मैं इसको further simplify करूंगा. अगर इस term को simplify करूं, first वाली को, इसको 10 raised to power minus 6, तो इसको 0.16 बार लिख सकते हैं, because this is infinite time repeatable, because 10 raised to power minus 6 है. सॉरी ये 0.6 वाला जो सा टाइम्स 10 raised to power minus 6. तो ये जो टर्म थी 6 वाली, इसको अगर आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, दिस विल बी इनफाइनाइटली रिपीटेबल. सो मैंने इसको बार की फॉर्म में लिख दिया. तो दिस बार on the 6 used to indicate the digits repeated indefinitely. This is just a representation. Of course इसके साथ ये multiply होगा sine of xi 0.01. The thing we are going to do is, although we have no way to defining the sign, अब हमारे पास ये defined है, but we have to look how to define this one, sine of xi 0.01. So we have no way of determining sine of xi 0.01, but we all know that all values of sine will lie between -1 and +1. मैंने अभी जैसे बताया था, साइन का जो ग्राफ है, साइन 0 is 0. So ये साइन का ग्राफ ऐसे ऑसिलेट करता है, right, between to the +1 and to the -1. So this sign has a freedom maximum, it can go to the -1, minimum it can go to the -1, and the maximum is the +1. So the error occurring if we using the approximation of the 0.995 for the values of the cos is bounded by, जो इसमें मेन चीज है
वो ये है, लेट्स से आई कैन राइट cos ऑफ 0.01, यहाँ पर लिमिट वाला कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, cos ऑफ 0.01 माइनस 0.99995 मॉड, ये हमने कहाँ से फाइंड किया है, फ्रॉम द टेलर अप्रोक्सीमेशन, और cos 0 में से जब ये माइनस करेंगे, दिस वाज द मेन फंक्शन। जैसे जब मैंने लिमिट की डेफिनेशन डिफाइन की थी, क्या फाइंड किया था, x approaches to x naught, the function f of x minus l, sorry, f of x is equal to l, तो and f of x minus l mod का था, and that was less than epsilon. So यही चीज मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, this is the function f of x minus the limiting value, and this must be less than or equal to the this error जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया, 0.16 is this one, as it लिखूंगा इसको, times 10 raised to power minus 6 and the mod of sine of xi 0.01, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, और मैंने क्या कहा है, ये वाला जो चीज है, this can only play between to the plus 1 and the minus 1, whenever you take the magnitude this will always positive, minus 1 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, प्लस 1, और 1 का मैग्नीट्यूड, सॉरी, प्लस 1 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, प्लस 1, so this term will remain positive. One can say that this term is less than equal to, because हमने इस term को remove कर दिया यहाँ से by using the hypothesis of the modulus, because we are assuming that this is always positive, so we will find that this 0.16 times 10 raised to power minus 6. So hence we approximated our value, which is 0.995, matches at least 5 digit of the 0.001, जो कि ये बनती है point, just a moment, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, 0.999483 less than 0.99995. Of course this is larger, जो हमने कंप्यूट की थी अप्रोक्सीमेशन, हमने ऐसा नंबर चूज किया जो इससे लेस है, दिस इज वी हैव चोज बाय आवरसेल्फ, ये कहीं से अज्यूम किया हमने इसे, हमने कहा ये दिस इज जो अप्रोक्सीमेशन, हमारी अप्रोक्सीमेशन इस नंबर से लार्ज है, माइनस, मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर रहा हूँ, -1.6 times 10 raised to power minus 6 less than equal to, of course cos की जब आप वैल्यू यूज करेंगे इससे लार्जर होगी, और ये इससे लेस होगी पॉजिटिव के साथ, 0.99995, यहाँ मैंने नेगेटिव साइन यूज किया था, अब मैं यहाँ पर पॉजिटिव साइन यूज करूंगा एज अ बाउंड, 1.6 times 10 raised to power minus 6, और ये मैं एक नंबर खुद से यूज करूंगा 0.9999517. अब देखें यहाँ पे, this have I chose by myself, this has I have chose by myself, और मेन चीज ये वाली थी, मैं इसको बल्कि ऐसा करें, मैं रेड में लिखता हूँ इसे, this was the main function, cos of 0.01, so this is upper bounded by the main approximation plus its truncation error, जो कि ये वाला था, this cos is bounded below by the approximation minus its truncation error. So this is how we can find the bound, because this matches up to the 5 decimal places. उससे now we are secured that this cos 0.01 जो कि हम ये compute करते start के अंदर ही, this is bounded above and bounded below by the 2 approximations. जी क्वेश्चन था यहाँ से किसी का, सर ये जो आपने R2 of x फाइंड किया 1/6 x cube sin xi of x, ये किस तरह फाइंड किया, दोबारा बता देंगे?
मैं बताता हूँ आपको। स्टार्ट में मैंने क्या कहा था, f of x is equal to polynomial प्लस इट्स रिमाइंडर, यही था। यस सर। पोलिनोमियल और उसका रिमाइंडर था। अब हमारे पास ये कितने, हाउ मेनी टाइम दिस इज डिफरेंशिएबल? सर इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल है। इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल था ना। और आर एन की डेफिनेशन क्या थी? द डेफिनेशन ऑफ एरर आर, इंटर मैं बताता हूँ, डेफिनेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे, आर एन ऑफ एक्स was equivalent to the fn plus 1 and to the xi of x divided by n plus 1 factorial and to the x minus x naught and to the n plus 1, यही था। यस सर। और इसने, अब क्वेश्चन पे जाएं, क्वेश्चन पे क्या कहता था, सेकंड टेलर पॉलिनोमियल। तो सेकंड हमारे पास n इज इक्वल टू 2 था, यही हमने यूज किया। यस सर। ये देखें, n is equal to 2, this one we have used n is equal to 2 over here, but the remainder says that this must be n plus 1। तो ये क्या बनेगा, f3, or you can say that 3 बनेगा ना, इसका मतलब थर्ड डेरिवेटिव। f3 भी कह सकते हैं और f ट्रिपल प्राइम भी कह सकते हैं। आई विल यूज द नोटेशन f ट्रिपल प्राइम, r, इसको r2 of x will equal to the f triple prime of xi of x, right, divided by 2 plus 1, 3 factorial कितना होता है, 6, and the x minus x naught कितना था, 0, and this is 3। अब जो फंक्शन था हमारा क्या था, cos x, उसका थर्ड डेरिवेटिव लें, क्या बनता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस साइन, सॉरी सॉरी, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है, सेकंड डेरिवेटिव उसका माइनस cos बनेगा, थर्ड डेरिवेटिव क्या बनेगा, अगेन उसका साइन ऑफ xi ऑफ x। यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट फंक्शन है xi ऑफ x है, डिवाइडेड बाय 6 and to the x cube, दिस इज द अवर रिमाइंडर r2 ऑफ x। अब इसको देखें रिमाइंडर को और इसको टैली करें, ये वाला, सही है। ये सेम है या डिफरेंट है, सेम है। ये वाला और ये वाला, आर द सेम और डिफरेंट, सेम है सर। सेम है। दिस इज हाउ वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम द डेफिनेशन। जी यहाँ पे किसी और का भी क्वेश्चन था, बोलें, आलियान अहमद खान। हाँ थैंक यू सर। सर मैंने थोड़ा पूछना लाउड था बोलें। कि अच्छा सर मैंने पूछना था कि जैसे इस क्वेश्चन में अब वेरिएबल्स तो सेम थे, इसकी वजह से आपने मल्टीप्लाई कर दिए थे दोनों को आपस में, x माइनस एक्स और x नॉट के। तो ये हर क्वेश्चन के लिए केस डिफरेंट होगा या फिर हमें ऐसे ही करना पड़ेगा आगे भी? आपने कहा ये क्वेश्चन है कि जैसे मैंने x माइनस एक्स नॉट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, सर जैसे x नॉट आखिर में जैसे आपने जब निकाला था 1/2x², तो आपने x नॉट और x को मल्टीप्लाई नहीं किया था सर? कहाँ मल्टीप्लाई किया है? सर वो यहाँ पे सर n = 2 and x नॉट = 0 वी फाइंड, और फिर p2x पे जो आपने निकाला है f डबल डैश 0 को डालकर। जी तो यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो फिर वो x नॉट, अच्छा हाँ हाँ नहीं नहीं आई एम सॉरी, अब मुझे समझ आई है। ठीक है। और दूसरा सर अगर आप मुझे बता दें ये जो 0.01 के बारे में, मतलब ये आया कहाँ से था? ये मैंने खुद कहा है, मैंने कहा व्हेन। अब उसने क्या कहा था कि जब देखें, मैं आपको बताता हूँ कि एक जस्ट मैं एक बड़ी क्रूड सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से
आप किसी पॉइंट के ऊपर JK में कहीं पर हैं, लेट्स से दैट पॉइंट इज कॉल्ड A, ठीक है, यस सर, और उसका डिस्टेंस है 1 किसी, ठीक है, ये रियल लाइन स्टार्ट करता हूँ, ये 0 है, ये 1 एंड दिस इज दी 2 एंड यू, आप इस पॉइंट के ऊपर एवेलुएट करना चाह रहे हैं अपना फंक्शन, राइट? यस सर, तो अपने आसपास भी चेक करना है कि ये आई एम सिक्योर्ड एट 0 और 2, तो मैंने जस्ट 0 के नेबरहुड के अंदर एक वैल्यू चूज कर लिया जो कि दैट इज वेरी क्लोज टू 0, which is 0.01. I can also ठीक। choose 0.1. अच्छा, तो ये मतलब हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है हम कौन सी वैल्यू उठा सकते हैं ये इसमें। डिपेंड करता है आपने इनिशियल आइटरेशन कहाँ स्टार्ट करनी है। मैं x ठीक। को जितना स्मॉल करता जाऊंगा ना, x 0.00001, जी उतनी जी, ज्यादा मेरे पास अप्रोक्सीमेशन अच्छी आएगी, अच्छा ठीक ठीक होगा राइट? सर, ठीक है। यस सर, और थैंक यू। क्योंकि हम एनालिटिकली कर रहे हैं, आई कैन नॉट डू नंबर ऑफ आइटरेशंस, बट वंस यू डू कंप्यूटेशनली, आप ऑफ कोर्स कंप्यूटर के अंदर कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कंप्यूटर के अंदर आप इरेशनल तो नंबर इनपुट नहीं कर सकते। यस सर, आप कंप्यूटर में ऐसा कह सकते हैं कि रैशनल नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/10⁻⁷, राइट? दिस इज द रैशनल नंबर, आप इसको यस सब्स्टिट्यूट सर, करेंगे। और सेकंड बात, जब आपने मैक्सिमम अच्छी अप्रोक्सीमेशन लेनी है अपनी टेलर सीरीज से, उसके लिए आपको उसकी टर्म्स को बढ़ाना होगा। यहां पर इसने क्वेश्चन में क्या कहा था? द सेकंड टेलर पॉलिनोमियल। यस सर, हमने उसकी फर्स्ट टू वैलिड टर्म्स, he can also ठीक। ask that the use the first 8 टेलर पॉलिनोमियल्स, तो वो भी कर यस सकते हैं। सर, अब इसने सेकंड पार्ट के अंदर वैसे कहा है इस क्वेश्चन के, मैं जस्ट यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। उसने जस्ट इस पार्ट में, जस्ट अ मोमेंट, उसने इस पार्ट में ये कहा है, लेट्स से ये दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन, मैं जस्ट यहाँ लिखता हूँ, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, ये वाला जो फर्स्ट पार्ट तो मैंने यहाँ राइट अप किया था, द सेकंड टेलर पॉलिनोमियल फॉर द एफ अबाउट द एक्स नॉट। ऑल्सो वो थर्ड के ऊपर भी कर रहा है, आई लीव इट टू यू टू चेक बाय योर सेल्फ। थर्ड पॉलिनोमियल जस्ट यही रेपिटेशन उसमें रिपीट होंगी सारी, और उसमें एक थर्ड पॉलिनोमियल और ऐड होगा, सही होगा सर, ठीक सही है? होगा। उसमें से आपके पास अप्रोक्सीमेशन इससे ज्यादा अच्छी आएगी। So the conclusion is the approximation based on your initial guess. The initial guess was this 0.01, and also it depends on the number of polynomials that we are using. ठीक हो, ठीक है? थैंक यू और सर, और, थैंक यू। यस और जो सर, थर्ड बात ये भी माइंड में रखेंगे आप, जिस तरह मैंने यहाँ पर इसको बड़ी कैटेगोरिकली इसके क्रॉस किया था। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फर्स्ट 2 टर्म्स देते हैं, दिस इज नॉट द मेथड। आपने यस, फर्स्ट 2 टर्म्स लेनी है, x जब x नॉट सब्स्टिट्यूट करके, उसने क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा है लेट f ऑफ x इज इक्वल टू cos x एंड x नॉट इज इक्वल टू 0। x नॉट इज इक्वल टू 0 करने के बाद आपके पास जो ये फर्स्ट 2 टर्म्स आती हैं, ये वाली यस फर्स्ट सर, एंड राइट। यस सर। अच्छा, यहाँ पर किसी और स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, थैंक यू। 484, यस 484, जी बोलिए। मुझे आई कांट हियर यू, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। सर कुछ बच्चे हैं उन्होंने ऐड होना है और वो रिक्वेस्ट की हुई है, वो ऐड नहीं हो पा रहे हैं। मैंने उनको आपको एक मैसेज किया था कि मैं ड्यूरिंग द क्लास किसी को ऐड नहीं करूंगा। मैंने कल आपको ईमेल भेजी थी, उस वक्त क्यों नहीं याद आया आप लोगों को? अब मैं लेक्चर दूं या ऐड करूं सबको, स्टूडेंट्स को? अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को इशू तो नहीं किसी बात पे? अगर किसी को इशू है वो पूछ सकता है। Sir, I have a question. Can you hear me? This is 484. लाउड बोलें थोड़ा सा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। Sir, जो P of x है, which is 1 minus half x square. ठीक है, सर तो x square मुझे समझ नहीं है कि वो x square क्यों है, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला लिखा P of x का, that is f double derivative x naught x minus x naught over 2 factorial.
तो उसमें उसकी पावर नहीं आपने लिखी हुई है, तो हाउ इज इट x स्क्वायर? एक सेकंड मैं बताता हूँ, एक सेकंड ठहरे। लेट्स बैक टू द कैलकुलेटर। हाँ, ये मैंने फार्मूला जो सा है ना, सॉरी मैं स्किप कर गया हूँ, मुझे यहाँ पर इसकी पावर लिखनी चाहिए थी, ये मेरे से गलती हुई है, सॉरी। ये ठीक कह रहे हैं आप, दिस इज द एक्स स्क्वायर्ड एंड दिस इज द एक्स क्यूब, सॉरी, थैंक यू। एंड यहाँ सर एक्स मेरा स्क्वायर्ड, सेकंड क्वेश्चन हाँ सर जी एक और भी सेकंड था बोले। कि जो 0.01 आप सर जो 0.01 आपने वैल्यू लिया, दैट इज ऑलवेज जो आपकी वैल्यू होती है जो आप गेस करते हो, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन योर x नॉट, राइट? ये मैंने x के नेबरहुड में जो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो चूज की है। अभी मैंने एक और सिर्फ स्टूडेंट को x, बताया था कि यू कैन चूज एनी वैल्यू बिकॉज सर लेकिन वी आर, x नॉट के ऊपर डिटरमाइन करना है, लाइक x नॉट 0 था तो दैट्स व्हाई आई चोज अ वैल्यू नियर 0, राइट? तो x नॉट के हाँ ऊपर जी, बेस की ना आपने। हमें एक्स नॉट के राउंड अबाउट कोई वैल्यूज चेक करनी है, बिकॉज हमने यहाँ तक तो इसका पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया था, अप्रोक्सीमेशन, हम जब एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन जब हमने उसकी अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है उसकी अपर एंड लोअर बाउंड के लिए, उसके नेबरहुड के अंदर फाइंड करनी है। यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यू एट जीरो, जीरो पे आप कैसे फाइंड करेंगे वैल्यूज उसकी, उसके बेस्ट पॉसिबल नेबरहुड के अंदर फाइंड कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने एक इनिशियल गेस लिया इसका। यू कैन ऑल्सो यूज दिस वैल्यू जो कि मैंने यहाँ लिखी है 0.0001 और 1/10⁻⁷। You can use any small value that is lying in the neighborhood of 0. ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, जैसे मैंने अभी बताया कि इसका हमने सेकंड के लिए किया है, थर्ड के लिए भी सेम प्रोसीजर यही रिपीट होगा और उसके अंदर अप्रोक्सीमेशन इससे ज़्यादा अच्छी आएंगी बिकॉज उसमें टर्म ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी। उसके लिए मैं जैसे यहाँ कॉपी पेस्ट करता हूँ इसे, ये देखें सेम यही प्रोसीजर स्टेप्स हैं उसके। ये देखें, क्वेश्चन है हमारे पास वही है, एक सेकंड ठहरें, ये क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन, ये तो हमने पहले कर लिया ऊपर। एंड दिस इज फॉर दिस वन। इसने यही कहा है कि सिंस थर्ड डेरिवेटिव इज द थर्ड पॉलिनोमियल रिमाइंडर विल बी एक्स नॉट दिस वन। उसने ये उसी चीज को आगे रिपीट किया और इसके अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर लिए हैं। और देखें यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन कितने सेम वही आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, 0.999995 फर्स्ट 5 डेसिमल प्लेसेस तक। दिस इज द मेन थिंग, थर्ड पॉलिनोमियल में भी और सेकंड पॉलिनोमियल में भी। ये देखें, ये रेपिटेशन है सेम। इसका मतलब है कि सेकंड थर्ड हमें सही उसकी अप्रोक्सीमेशन दे रहा है, बट इफ यू वांट टू हैव द मोर डेसिमल प्लेसेस यू कैन मूव अप टू थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑर्डर, किसी पे भी जा सकते हैं आप। यहाँ अच्छा एक और चीज माइंड में रखें कि यहाँ तक हमने जितना काम किया दिस इज ओनली फॉर द टेलर सीरीज। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग द टेलर पॉलिनोमियल्स। वी यूज द थर्ड टेलर पॉलिनोमियल एंड इट्स रिमाइंडर टू फाइंड टू अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट करेंगे इसके सॉल्यूशंस को बाय द इंटीग्रल्स। उसमें जस्ट उस फंक्शन को उस इंटीग्रेशन के अंदर पुट करेंगे और वहां से उसके अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे और वो सेम अप्रोक्सीमेशन आएंगी मोर लेस। मैं कल की क्लास में डिस्कस करता हूँ वो। यहाँ मैं क्लास फिनिश करता हूँ। अगर किसी को स्टूडेंट्स को कोई इशू है या किसी बारे में आप बता सकते हैं, जस्ट रेज योर हैंड, आई विल आस्क यू अबाउट द कोर्स, अबाउट द एनीथिंग, या मैं बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ या स्लो चल रहा हूँ, कुछ भी इश्यूज हैं आप बता सकते हैं। आप खुद से अनम्यूट मत करिएगा, मैं खुद कहूँगा आपको जब करें अनम्यूट। मैं क्लास में बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ या आपको समझ नहीं आ रही या आपके कुछ इश्यूज हैं या आप कुछ प्रिलिमिनरीज हैं उसको लैग कर रहे हैं या
मुझे थोड़ा स्लो चलना चाहिए या क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए, वो मुझे बता दें। रिकमेंडेशंस हैं आपकी तो जस्ट रेज योर हैंड्स। आउट ऑफ 51 एक ही की रिकमेंडेशन है, बाकी इसका मतलब है सबके लिए ठीक है। जी 5 to 4 बोलें क्या रिकमेंडेशन है? सर रिकमेंडेशन है बुक के बारे में बता दे सर। जी बोलें। सर बुक के बारे में बता दे, कौन सा बुक फॉलो करना है? बुक मैंने इसी टीम्स में फाइल सेक्शन के अंदर अपलोड कर दिया है, चलो सही है, थैंक यू सर। बर्डन फेरीज की मैंने बुक भी अपलोड कर दी, टाइम टेबल भी अपलोड कर दिया, और मैंने वो क्या कहते हैं उसे, आपका कोर्स ब्रेकडाउन वो भी अपलोड कर दिया इस पर। जी हारून जमशेद बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं? किसके ऊपर? यूट्यूब पे। देखें, इंस्टीट्यूट इज नॉट वेलकमिंग टू अपलोड आवर लेक्चर्स ऑन द यूट्यूब, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस। इस पे क्या इशू है आपको? सर यहाँ पे जो होता है वो लेक्चर सही नहीं चलता जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुनो। तो इसका एक है ना, मैं आपको एक स्ट्रीम बनाऊंगा इसकी अभी, तो उसके अंदर एक टैब आएगी, तो स्ट्रीम के अंदर आप लेक्चर्स देख लीजिए करिएगा सारे।